Hello, people. So, today we are looking in the topic of Adi Karma Yogi Abhiyan. Adi Karma Yogi Abhiyan is the basically a government training program started to improve the skills of officers and the staff working in the tribal areas of India. It is world's largest travel leadership mission covering 11 crore citizens across 30 states and UTs. It is led by Ministry of Travel Affairs, aiming to build a decentralized travel governance ecosystem. Targets training of 20 lakh travel change makers across 1 lakh villages and 550 tribal dominated district, promoting last mile convergence and effective service delivery. Three-tier leadership model: Adi Karma Yogi, Adi Sahyogi, and Adi Sathi for capacity building, community facilitation, and governance support. Travel Village Vision 2030, a special Gram Sabhas adopt village level goals on education, health, livelihood, inclusion, and infrastructure, supported through Adi Seva Kendras as single window services with voluntary service. Core purpose क्या है? To train, to mobilize, and to empower the travel communities, amplify their voices, and ensure the participatory planning through Village Vision 2030 action plan. What actually happens is that India has many travel districts. इंडिया में बहुत सारे ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑफिसर्स वहाँ पे काम करते हैं उनको वहाँ का जो ट्राइब का जो बेसिक कल्चर है, उनका जो चैलेंजेस हैं, उनका जो नीड है, उसको ऑफिसर्स वहाँ पे जो काम करते हैं वो बेहतर समझें और वो पीपल को सर्व कर सके इन अ बेटर वे, ट्रैवल पीपल को सर्व कर सके इन अ बेटर वे। और इससे जो हमारा गवर्नेंस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ट्रैवल रीजन में वेलफेयर स्कीम पहुंच पाएगी और लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस पे पीआईबी भी देख लेते हैं। इस पे आदि कर्म योगी अभियान रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम envisaged as the world's largest travel grassroots leadership program. Ministry of Travel Affairs has officially launched it, launched by the visionary leadership of Honorable Prime Minister. इसका क्या है? सेवा, संकल्प एंड समर्पण, reflecting the guiding principle of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. This initiative forms a key part of जनजातीय गौरव वर्ष and contributing towards the vision of a विकसित भारत by 2047. तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोगों ने अभी देखा. प्रमोट अ रिस्पॉन्सिव पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस एट विलेज एंड कम्युनिटी लेवल. इसका आउटकम क्या है? आदि सेवा केंद्र, गवर्नेंस लैब वर्कशॉप्स, ट्रैवल विलेज एक्शन प्लान, सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड इंटरवेंशन, कॉल फॉर वॉलेंटियर्स, जिसमें होंगे आदि सहयोगी जो कि होंगे टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स हु मेंटर एंड मोबिलाइज कम्युनिटीज़. आदि साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NRLM members, tribal elders, youth and local leaders supporting the implementation and outreach. Community leadership ट्रेनिंग होगा जिसमें कि यूथ, वुमेन, एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस. नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड आउटरीच विल रीच over 1 lakh travel dominated villages. It builds upon the successful implementation of flagship government scheme including धरती आबा, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन and National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. The Ministry of Travel Affairs calls upon all the stakeholders, travel communities, youth, SHG, civil society, and government officers to actively participate in this. In the historic initiative reinforcing the travel leadership and
inclusive development across the nation. So this Adi Karma Yogi Abhiyan is a very important steps toward the improving governance in the tribal region by strengthening the skills, the awareness, and the sensitivity of government workers. The program ensures that the government schemes truly reach the people who need them most. In the long run, it helps to build trust, improve service delivery, and support overall development and dignity of the tribal communities. So this was all about Adi Karma Yogi Abhiyan. We will discuss some more schemes. Till then, thank you.